to start at 3, but in a hearing. Let me introduce myself. My name is Mahnoor Chaudhary, and I have been requested to give a session on domestic violence and the rights of women involved in such cases. सबसे पहले let's start with very basic. What is domestic violence? कभी कभार अक्सर most of the time most of the times ऐसा होता है कि in cases of domestic violence जब एक दो बार ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, be it a sexual abuse, be it physical abuse, emotional abuse, any kind of abuse, तो people do resist कि हम जो है does it come under the definition, under the ambit of domestic violence. So sometimes जो कुछ definitions हैं, they are very their scope is very narrow. वो अक्सर जो है one time incident या two time incident को जो है इंक्लूड नहीं करते डोमेस्टिक वायलेंस में. जो सबसे जनरल डेफिनेशन हम डोमेस्टिक वायलेंस की हमें मिलती है, it is a pattern of abusive behavior in any relationship that is used by one partner to gain power and control over another. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन बहुत नैरो स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ पैटर्न ऑफ अब्यूज उसको अब्यूज कंसिडर किया नहीं जाता. अब कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम डोमेस्टिक वायलेंस को जो है सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप तक महदूद कर देते हैं, बट दैट्स नॉट द केस. आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन में भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, और कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर टू गेन पावर जो दूसरी पार्टी है दे रिजॉर्ट टू फोर्स या दे रिजॉर्ट टू अब्यूज. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, वहां पर जो है वी कंसिडर कि इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. Domestic violence जो है it is very prevalent in the society, especially in our country. There are many reported and not reported cases on daily basis जो कि हमारे पास आते हैं, and most of the times जो victims होते हैं या survivors of domestic violence होते हैं, they try not to go to courts or they do not seek legal help, जिसकी वजह से अक्सर ये केसेस जो हैं वो अननोटिस चले जाते हैं. इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता. ऑल्दो अब इस चीज के बारे में काफी ज्यादा एडवोकेसी हो रही है या काफी ज्यादा अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, और लेकिन फ्यू इयर्स बैक इस पे बात करना या लोग जो मोस्टली हस्बैंड एंड वाइफ्स के जो केसेस आते थे, तो पीपल यूज टू कंसिडर द वुमेन इन्वॉल्व कि शी इज पेटी, शी इज ब्रिंगिंग पेटी इश्यूज टू द कोर्ट, और उसको डिफरेंट लेबल्स दिए जाते थे. तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो विक्टिम पार्टी होती है, इट कैन बी एनीवन, इट इज नॉट जेंडर्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद एज, इट हैज नथिंग टू डू विद बैकग्राउंड. आप बच्चे हो सकते हो, आप यू कैन बी अ वुमेन, यू कैन बी एन एडल्ट, यू कैन बी अ टीनेजर. कोई भी जो है irrespective and even irrespective of the background, even if you're financially independent, even if you do not depend on someone या आपका कोई background professional है, तब भी it can happen to anyone. और domestic violence की various forms हैं. It can be physical, sexual, emotional. We will talk about them later in the session. और ये एक साइकिल ऑफ टेंशन होती है, साइकिल ऑफ वायलेंस होती है, रिकंसिलिएशन होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अब्यूजर होता है दे आर मैनिपुलेटर्स एज वेल. वो अक्सर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है, स्पेशली जो मैनिपुलेटिव हस्बैंड्स होते हैं या मैनिपुलेटिव वाइफ्स होती हैं जो कि अब्यूसिव जो अब्यूसर का रोल प्ले कर रही होती हैं बेसिकली. वो अक्सर जो है दे ट्राई टू मैनिपुलेट द विक्टिम, और वो रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि बात घर से बाहर ना निकले या बात जो है वो रिपोर्ट ना हो. अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इट इज वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड. मिलियंस ऑफ वुमेन जो है इससे अफेक्ट होती हैं, हर कल्चर की, हर एज की, हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स की. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो तो तभी आप डोमेस्टिक वायलेंस का जो है विक्टिम बन सकते हो या सर्वाइवर बन सकते हो. इट्स नॉट रेलिवेंट.
आप इवन एलीट क्लास की जो खवातीन होती हैं, इवन दे गो थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस. और डोमेस्टिक वायलेंस की वी विल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. तो it's not always physical or sexual abuse. It can be emotional abuse. It can be financial abuse. तो कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई वो नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप की खातून या खवातीन जो है वो अफेक्ट होंगी डोमेस्टिक वायलेंस से. अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इट इज अ ग्लोबल इशू. कि ये इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ये पाकिस्तान में है. इट्स वर्ल्ड वाइड इशू. और देयर आर डिफरेंट टॉक्स, देयर आर डिफरेंट सेशंस गोइंग ऑन. अवेयरनेस सेशंस होते हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस. और ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट्स आती हैं रिलेटेड टू domestic violence, related to the treatment of women. So it is a global issue. Or most of the times, why domestic violence is associated with women is कि most of the times women are the victim. Um, some people view them as weak target. और तो इसीलिए most of in many cases, क्योंकि if the victim is a man, बहुत कम ऐसा होता है कि वो केस रिपोर्ट होगा. बिकॉज मर्दों को जो है वो बोलने की, उनको उस तरह जो है हमने प्लेटफॉर्म दिया नहीं है कभी. तो इस तरह, क्योंकि ज्यादा रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो फीमेल्स के होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एसोसिएट भी फीमेल्स या चिल्ड्रन के साथ किया जाता है. अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज्यादा होते हैं. पीपल आर शाय, पीपल आर रिलक्टेंट टू गो टू द कोर्ट्स ड्यू टू डिलेड जस्टिस, डिलेड प्रोसेस. समटाइम्स काफी हमारा जो प्रोसीजर होता है लीगल सिस्टम का वो काफी रिजिड है, काफी लेंथी हो जाता है इन सम केसेस. तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस लेंथी प्रोसीजर, वो अवॉइड करते हैं कि हम जो है कोर्ट्स को रुजू ना करें. तो इस वजह से, और इट कैन बी के रिसोर्सेज नहीं है, शेम, फियर, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है. कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि जो भी वो जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, इट इज डोमेस्टिक वायलेंस. उनको मोस्ट ऑफ द जो पुराने जमाने की औरतें होती हैं वो, और वो समझते हैं कि नहीं नहीं, इट्स ओके इफ योर हस्बैंड इज यूजिंग फोर्स ऑन यू, तो इट्स फाइन. क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती कि नो, इट्स नॉट फाइन, नो वन कैन हार्म यू, नो वन कैन यूज फोर्स ऑन यू. तो एक ये जो है इशू होता है. अब डोमेस्टिक वायलेंस जब होता है तो सिर्फ विक्टिम को अफेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है जिसमें वाइफ इज अ विक्टिम, तो इट won't only affect the wife. अगर उनके कोई if they have any children, so it will indirectly affect them, because they will witness the abuse, they will witness how the parents fight, how the father is using force, how the father is abusing the mother. तो ये childhood trauma जो है, most of the time childhood trauma is also related to this abuse. तो indirectly आपके बच्चे भी affect होते हैं. और even अगर जो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन में भी अब्यूज है, तो तब भी जो चिल्ड्रन है, क्योंकि दे आर यंग, तो उनको जो है दे कैन गेट ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस होल एक्सपीरियंस. कुछ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करते हैं जिसमें जेंडर इक्वालिटी आ सकती, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जेंडर इक्वालिटीज आती है, सोसाइटल एटीट्यूड्स आते हैं टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर जेंडर. तो इस तरह मोस्ट जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, तो वन ऑफ द, आई वुड से, हर्डल्स जब रिपोर्टेड केसेस में आते हैं, वन ऑफ द हर्डल्स के लोग क्यों रिलक्टेंट है टू गो टू द कोर्ट्स एज कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स. अब जो है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से आपकी कम्युनिटीज और आपकी इकोनॉमीज भी अफेक्ट करते हैं. इट कैन हैज फार रीचिंग इफेक्ट. कि फॉर एग्जांपल, अगर फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और आपके जो है हेल्थ केयर कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आती है, प्रोडक्टिविटी जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है. एक सोशल सर्विसेज में और ओवरऑल कम्युनिटी में एक नेगेटिव ऑरा होता है ड्यू टू दिस डोमेस्टिक वायलेंस. अब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई इज देयर नीड टू डिस्कस दिस? बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से आपकी लाइफ रिस्क में है, आपकी वेलबींग रिस्क में है. यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट सिक्योर. जो सर्वाइवर्स हैं, दे कैन नॉट कम on a platform, or they cannot share their stories because they
their fear कि उनको एक I'm sorry, we can continue after the azan. So we were talking about कि why is it important to address domestic violence? So as we said कि domestic violence के जो DVC के victims होते हैं, survivors होते हैं, उनकी life is in danger, उनकी well-being is in danger. They do not feel secure. कोई सर्वाइवर भी होगा तो दे आर रिलक्टेंट कि वो किसी प्लेटफॉर्म में आकर अपनी जो है स्टोरी शेयर कर सकें, लोगों को इंस्पायर कर सकें. सपोज कोई रिपोर्टेड केस हुआ है किसी के इन फेवर जो है केस डिसाइड हुआ है और द कल्प्रिट हैज बीन पनिश्ड, तो वो फिर भी जो है दे आर रिलक्टेंट कि शुड आई गो एंड टेल माय स्टोरी, शुड आई इंस्पायर अदर पीपल, बिकॉज उनकी जो है दे डोंट फील सेफ, दे आर अफ्रेड कि उन पे लेबल्स लगेंगे, दे आर अफ्रेड कि लोग they will receive backlash. And secondly, it is very important कि at a stage, especially during the time 2020, it is 2023, almost 2024, and it is about time that we break this cycle. Someone should stand up and say that it's enough. This is absurd कि कोई जो है आप पर किसी भी किस्म का abuse करे, किसी भी किस्म का आप resort to force हो या इस तरह जो हाँ domestic violence, it it's very old thing, or अब is there should be a break to this thing, and it should be demolished for once and for all, क्योंकि इसमें हमें कोई फायदा नहीं होता. Society is not gaining anything from this evil, so it's better to finish it. और secondly, सोशल जस्टिस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस को जो है टैकल किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि नो, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस इट्स नॉट ओके, यू हैव टू स्पीक अप. तो these are some key points कि why domestic violence is important. वाइल्ड डोमेस्टिक वायलेंस जो है इट कैन अफेक्ट एनी जेंडर. यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वुमेन राइट्स की, कि पाकिस्तान में रहते हुए इफ अ पर्सन इज अ विक्टिम टू डोमेस्टिक वायलेंस, तो द वुमेन और द विक्टिम वो किस तरीके से जो है वो लीगल प्रोटेक्शन सीक कर सकती है, वो किस तरीके से जो है रेमेडी जो है अवेल कर सकती है. अब फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है, देयर
मेजर फॉर्म्स जो हैं हमारे पास वो आ जाते हैं, फिजिकल अब्यूज आ जाता है, और इमोशनल अब्यूज आ जाता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज आ जाता है, सेक्सुअल अब्यूज आ जाता है, फाइनेंशियल अब्यूज आ जाता है, डिजिटल अब्यूज आ जाता है। फिजिकल अब्यूज, इट्स क्वाइट सिंपल एज द टर्म सजेस्ट कि इट इज रिलेटेड टू कि जब आप when a person resort to force and when a person resort to violence, hitting, slapping, punching, all these kinds of abuse come under the category of physical abuse. इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज तब होता है जब आप जो है व्हेन द अब्यूजर मैनिपुलेट, व्हेन द अब्यूजर जो है वो इमोशनली जो है विक्टिम को ड्रेन कर रहा होता है, ही इज कंप्लीटली ड्रेनिंग द विक्टिम इमोशनली, एंड कांस्टेंट क्रिटिसिज्म हो गया और ह्यूमिलेशन हो गई. आई वाज गोइंग थ्रू, they they came up a video on social media, जिसमें it was a clip from a serial going on, I don't know, but the husband was continuously abusing the wife emotionally, और वो इस तरह उनको अपनी वाइफ को अब्यूज कर रहा था कि उस वाइफ को, उसको जो विक्टिम थी उसको ये रियलाइज भी नहीं हो रहा था दैट शी इज गोइंग थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस. उसको ये लग रहा था कि नहीं, मुझ में आई एम नॉट इनफ, माई हस्बैंड इज परफेक्ट. तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां पर हस्बैंड जो है वो कंटिन्यूअसली वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट कर रहे होते हैं वाइफ्स को कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट गुड एट दिस, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग. और वो इस तरह मैनिपुलेट करते हैं, दे आर वेरी गुड मैनिपुलेटर्स. तो इट, जो विक्टिम होता है उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि दिस इज टॉक्सिक, दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और वो अपने आप को ही जो है वो ब्लेम ब्लेम गेम चलती रहती है उधर. सेक्सुअल अब्यूज जो है, नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है इसमें आ जाती हैं. इट इट कवर्स डोमेस्टिक रेप, सॉरी मैरिटल रेप, एंड अनवांटेड सेक्सुअल एंगेजमेंट जो है वो सेक्सुअल अब्यूज में आ जाती है. फाइनेंशियल अब्यूज वहां पे होता है जहां पर जो अब्यूजर होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है विक्टिम्स एक्सेस टू फाइनेंस, विक्टिम एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, और वो for example shortage of money, for example husband is not giving enough money, he is trying कि वो सफर करे फाइनेंशियली, ही इज ट्राइंग कि उसको अपॉर्चुनिटीज उस तरह ना मिले, ही इज ट्राइंग कि मॉनेटरी वो इतनी स्ट्रांग ना हो जाए, फाइनेंशियली वो इतनी स्ट्रांग ना हो जाए. डिजिटल अब्यूज जो है इट कवर्स कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी के यूज की तरह से जिस तरह लोग हरास करते हैं, अब्यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मोस्ट इन मेनी केसेस दैट आई हैव विटनेस, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ सेपरेशन हो जाती है, जहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग आउट और दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, या जो वाइफ है उसने कोई अगर खुला का केस फाइल किया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो दूसरी पार्टी होती है दे रिजॉर्ट टू डिजिटल अब्यूज, कि वो दे विल सेंड मैसेजेस, दे विल सेंड वायलेंट मैसेजेस, थ्रेटन करेंगे उनको कि अगर आपने इस तरह किया तो, साइबर बुलिंग जिस तरह होती है. तो या फिर एक्सप्लिसिट पिक्चर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर केसेस में वी हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पर हस्बैंड्स जो हैं वो दे post explicit pictures of their ex-wives on social media just to threaten them or just to tease them, or because they have a violent nature. अब जब बात होती है लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट्स में हमारे पास वन ऑफ द मेन जो लेजिस्लेशन आती है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, क्रिमिनल क्रिमिनल अमेंडमेंट 2006. अब इसमें हम क्योंकि हमारी ऑडियंस वाज आई वाज टोल्ड कि वो जनरल पब्लिक होगी, तो इसीलिए वी वांट डिस्कस द एक्ट इन डिटेल, जस्ट सम ऑफ द राइट्स जो कि इस एक्ट में से हम अवेल कर सकते हैं. तो वी कैन गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, वी कैन गेट रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ मिल सकती है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर हस्बैंड जो है वो they are irritating, they are no, they are continuously following their ex-wives, और अगर कोई डाइवोर्स का केस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड ऐसे करते हैं कि दे गो टू द वाइफ हाउस और उसको थ्रेटन करते हैं कि नहीं, यू हैव टू विदड्रॉ द केस और समथिंग. तो वहां पर द वुमेन कैन फाइल फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स. प्रोटेक्शन शेल्टर्स जो है वी विल डिस्कस लेटर ऑन के few of the organizations that are working in Pakistan. तो प्रोटेक्शन शेल्टर्स हम जो है वो
an option for people and for women victims in Pakistan कि वो ये प्रोटेक्शन शेल्टर से जो है हेल्प सीख कर सकती हैं, पुलिस असिस्टेंस हो सकती है, आप पुलिस से हेल्प सीख कर सकते हो। और अगर पुलिस नहीं भी हेल्प करती तो यू कैन गो टू कोर्ट एंड आस्क फॉर पुलिस असिस्टेंस। फिर जहाँ पे केसेस होते हैं सेक्सुअल अब्यूज के, वहाँ पर मेडिकल या इवन फिजिकल अब्यूज में जहाँ पर हिटिंग या स्लैपिंग या जहाँ पे पंचेस वगैरह या चोकिंग वगैरह किया होता है, वहाँ पर जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन जो है प्रोवाइड करते हैं कोर्ट्स। जैसे मैरिटल रेप्स में भी द फर्स्ट थिंग जो आप यू हैव द वुमेन हैज टू go through a medical examination. Rehabilitation centers and support, as I've said कि हम अभी डिस्कस करेंगे। I will provide few of the organizations जो कि काम कर रही हैं। There are many organizations जो कि छोटे लेवल पे भी काम कर रही हैं, लेकिन some of the major, तो वी विल डिस्कस कि वो रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करती हैं। ऑब्वियसली जब एक विक्टिम इस सिनेरियो से, इस साइकिल से, इस पैटर्न से, अब्यूसिव पैटर्न से गुजर रहा होता है, तो उनकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा हार्म होती है, फिजिकल कंडीशन भी। बट स्पेशली फॉर पीपल हु गो थ्रू इमोशनल अब्यूज, उनके लिए टू गेट बैक टू लाइफ, टू गेट बैक टू नॉर्मल, दे नीड हेल्प। तो ऐसी कंडीशंस में there are organizations that are trying to help the survivors of domestic violence. Another act is Domestic Violence Prevention and Protection Act 2022. इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें जो है, क्योंकि पाकिस्तान में बिकॉज देयर इज एन एक्ट, तो ये डेफिनेशन अप्लाई करेगी। तो एनी एक्ट और कंडक्ट committed by a person against a woman, child, or vulnerable person with whom they have a domestic relationship. वो इसमें जो है दे हैव, इट इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। इसकी हम कई इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं कि कोई भी एक्ट टू कंडक्ट जो किसी भी वल्नरेबल पर्सन के खिलाफ होगा। अब वल्नरेबल पर्सन जो है वो एक, इट कैन बी अ वुमन, इट कैन बी अ चाइल्ड, इट कैन बी एन एल्डरली पर्सन जिसके साथ कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, मोस्टली देयर आर टाइम्स, हमने अक्सर वी गो थ्रू सोशल मीडिया, तो अक्सर ऐसी क्लिप्स आ जाती हैं जहां पर बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ वायलेंट हो रहे होते हैं, या जो है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ वायलेंट हो रहे होते हैं। अगर कोई एल्डरली पेरेंट्स उनके घर में है, तो अक्सर आई हैव सीन, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अक्सर ये क्लिप्स वायरल हो जाती हैं जहां पर जो है बच्चे अपने एल्डरली पेरेंट्स के साथ दे आर ट्रीटिंग देम वायलेंटली। तो ऐसी कंडीशन में भी, क्योंकि दे आर एट अ वल्नरेबल प्लेस, तो वहां पर भी इट इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने कहा है फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है, हरासमेंट हो सकती है, स्टॉकिंग हो सकती है, और कोई भी हार्मफुल बिहेवियर हो सकता है जिससे जो दूसरा जो विक्टिम पर्सन है, ही और शी फील्स थ्रेटेन्ड। अब इस लॉ का मेन जो इस एक्ट है, इसका मेन मकसद ये है कि दे वांट टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर प्रायोरिटी इज कि डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट किया जाए। इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, इट शुड बी रिस्ट्रेन्ड, किसी भी तरीके से वी शुड वर्क ऑन demolishing this evil from the society, and then they want to protect the victims. Legal remedies provide करने हैं, protection orders दे सकते हैं courts के। for example, in most cases वो इस तरह कर सकते हैं कि ऑर्डर दे दें कि इन फॉर दैट दिस पर्सन इज थ्रेटेन्ड फ्रॉम, या अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल भी रहा है कोर्ट में, तो वो उस जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और मॉनेटरी रिलीफ दे सकते हैं। ये सेंटर्स और हेल्पलाइंस भी इन्होंने इस्टेब्लिश की हैं जो कि सपोर्ट करती हैं विक्टिम्स को डोमेस्टिक वायलेंस के, अवेयरनेस रेज करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। अब हाउ कैन यू एजुकेट योर सेल्फ, हाउ कैन यू टेक योर एक्शंस फॉर योर राइट्स? First of all, you need to educate yourself and others. Agar, for example, if you are attending this session, you should share with other people what you learned from here. You should, अगर आप देख रहे हैं कि someone is going through this, you should educate them. You should give them awareness कि what you are going through, what your relationship is not okay. For example, अगर कोई फिजिकल, वर्बल अब्यूज भी आपके सामने हो रहा है किसी रिलेशनशिप में, तो यू शुड
help that person, you should tell them, क्योंकि most of the time जब verbal abuse हो रहा होता है या जब emotional abuse हो रहा होता है, तो the victim party, he or she is not aware कि he is being abused. तो उनको किसी बाहर वाले की हेल्प चाहिए ही होती है कि वो किसी तरीके से उनको बताएं, उनको अंडरस्टैंड करें कि नो, दिस इज नॉट ओके, यू आर गोइंग थ्रू अ केस ऑफ वायलेंस, अ केस ऑफ अब्यूज. और अगर आपको किसी सर्वाइवर का पता है, यू शुड सपोर्ट देम रादर देन गिविंग देम लेबल्स, रादर देन लेबलिंग देम. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइवर्स जो है वो रिलक्टेंट इसीलिए होते हैं बिकॉज दे रिसीव अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. एक तो इंसान, आई मीन द विक्टिम, द सर्वाइवर, वो अब्यूज से गुजर के आया है, एंड देन अगेन पीपल डू नॉट बिलीव. मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई स्पेशली वुमेन जब वो डिसाइड करती हैं दे वांट टू कम आउट ऑफ अब्यूसिव रिलेशनशिप, तो मोस्ट ऑफ द टाइम all they receive is negativity. All they receive is that, oh, you should have done more, or you lacked somewhere. But that's not true. आप abuse का कोई भी, there is no justification for abuse. There is no justification for domestic violence. So if you know someone who is a survivor of domestic violence, you should support them, and you should speak out for domestic violence. If you see someone abusive, you should call them out. You should volunteer. You should donate for organizations. अक्सर volunteering programs होते हैं उनके, जहाँ पर you can go and help in the shelters. You can donate them. जैसे भी, it can be monetary, आप, or it can be just कि आप कोई food या कोई clothing वगैरह के थ्रू आप हेल्प कर रहे हो. And be a responsible bystander. Uh, if you see abuse happening in front of you, speak out for it. I again, क्योंकि सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज ऑन इट, हर चीज आपको नजर आ रही होती है. तो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस वीडियो एट अ मॉल जहाँ पर the husband was literally verbally abusing his wife, and everyone was just standing there and not doing nothing. तो be a responsible bystander. If you see कि दिस इज, कोई आप देख रहे हो कि एक बंदा जो है अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बच्चे को वायलेंट बिहेव कर रहा है उसके साथ, तो यू शुड कॉल देम आउट, यू शुड रिपोर्ट देम. इफ यू सी के दिस इज नॉट ओके बिहेवियर, अगर वो पब्लिक में ऐसे कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड दे डू इन क्लोज डोर्स. और जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं, वी कैन हेल्प देम, हम एडवोकेट कर सकते हैं. वी कैन यू नो, अगर यू नो कि कोई प्रिवेंशन प्रोग्राम इज टेकिंग प्लेस देयर एट सम शेल्टर और एट सम ऑर्गेनाइजेशन, तो यू शुड स्प्रेड द वर्ड, एंड यू शुड टेक पार्ट इन पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव एडवोकेसी. कोई ऑर्गेनाइजेशंस अगर काम कर रही हैं इसके लिए, तो आप जो है, यू कैन राइट योर ऑफिशियल्स, जो आपके इलेक्टेड एमपीएज होते हैं, आप उनको लिख सकते हैं. यू कैन साइन पिटिशंस. आप जो कम्युनिटी इनिशिएटिव्स होते हैं, आप उनमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो. सम ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वाइट रिबन पाकिस्तान इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दस्तक फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बेदारी फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सच एक्सेस टू जस्टिस, ये कोई इसमें ये 4 मैंने ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड की हैं. इसके अलावा भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इसके अलावा बहुत से मेनी वुमेन लॉयर्स आर हेल्पिंग डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स. अक्सर जो आप, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर इफ यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज फॉर टेकिंग अप योर केस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लॉयर्स होते हैं, दे कैन बी फ्लेक्सिबल, और वो आपकी हेल्प कर देंगे आउट ऑफ द वे जाकर भी. तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, या अपना माइक ऑन म्यूट अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.